Okay, good morning, students. Today I am here with a new chapter, and the chapter is human reproduction. Since we all know that humans are sexually reproducing or viviparous organisms, and there are various of the events which are taking place in case of the human beings. And what are these events? The first event is called as gametogenesis. What is gametogenesis? Gametogenesis means the process of the formation of the gametes, either the male gamete or female gamete. ठीक है. And the male gamete which are produced in human beings are called as sperm, while the female gametes are called as ovum or eggs. The second thing which takes place in as in events of sexual reproduction is transfer of male gamete in the female genital tract, which is also called as insemination. Insemination means transfer of sperm into the female genital tract. And while the transfer takes place, after transfer the male gamete fuses with the female gamete during the process of the fertilization, and the zygote formation takes place, and this zygote starts to divide mitotically, and it forms blastocyst, and this blastocyst comes into the uterus and gets attaches with the uterine wall, and the process is called as implantation. So this is the third step. And after that, a new period starts. This period is called a gestation period. It is of approximately 280 days, in which the blastocyst, or we can say that the embryo, develops and converts into fetus, and finally the fetus is ready for the delivery. In the biology we are using a scientific term for the delivery of the baby. It is called as parturition. And when the parturition takes place, finally the all the events of sexual reproduction complete and the baby comes out. Is it clear? And there is quite distinction between the human male reproductive system and female reproductive system. And what are these? I am going to tell you that. Since we know that a human male can produce sperm till the age of the 80 or throughout the life, while the production of the ovum or egg initiates in the human female at the age of the puberty, like 10 to 12 years, and it lasts as the age of approximately 50 years at menopause. So there are quite differences between the male and the female reproductive system. So right now we are going to discuss about male reproductive system in human beings. So I am going to initiate this topic. Now, since we know that human male reproductive system is located in the pelvis region. Now, what is the pelvis region? Okay, you know that the bone of the hip, it is called as pelvic girdle, and this region is called as pelvis region. Okay, so human male reproductive system consists of four different things. Now, what are these things? You must have to remember. चार अलग अलग चीज़ों से जिनसे बना हुआ होता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फर्स्ट वन, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है, जो चार चीज़ें बड़ी एसेंशियल चीज़ें हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. एक तो है टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस. दूसरा होता है एसेसरी डक्ट्स. एसेसरी डक्ट्स मतलब टेस्टिस का जो भी सिक्रेशन होगा, जो भी उनका प्रोडक्शन होगा, उस सिक्रेशन को रिलीज़ करने में मदद करेंगी. और अलॉन्ग विथ सम ग्लैंड्स विच ऑल्सो रिलीज देयर सेक्रेशन along with the secretion of the testis. These are called glands. And external genital organ, या जिसको external genitalia बोलते हैं, ये फोर्थ वन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट. इसका जो रोल होता है, ये इंसेमिनेशन करने में मदद करता है, यानी कि ये जो स्पर्म है इसको रिलीज़ करने में मदद करता है फीमेल जेनिटल ट्रैक में. ठीक है. सो आई एम रिवाइजिंग वंस अगेन. देयर आर फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फर्स्ट वन इज टेस्टिस, second one is accessory ducts, third one is accessory glands, and the fourth one is external genitalia or external genital organ. So today we are discussing only the very first one. We will not discuss all four. We will discuss only the first one. And the first one structure which is present in the male reproductive system, it is called as testis. Now we are discussing it in detail. Now, as we all know that in human beings,
the testes are located, or these are situated outside the abdominal cavity. Here you can observe in this figure. Are you observing it? ठीक है, these a single testis is appearing here. This is located in a outside the abdominal region in a pouch like structure. This pouch is called as scrotum. ठीक है, this pouch like structure is called as scrotum, and you are observing here testis, and testis are located into a pouch like structure, scrotum. ठीक है, okay. And why these are located outside the body? There is a reason behind it. Since we know that what is the temperature of human body, 37 degree Celsius approximately, and the temperature which is required for the production of sperm is quite lesser than the human body temperature. It means 2 to 2.5 degree lesser than the body temperature. So what will be the temperature? 37 is generally the body temperature, so it may be 34.5 to 35 degree Celsius temperature, degree Celsius temperature will be required. So that's why the testis is located outside the body, because if it will located inside the body, the process of spermatogenesis will not take place. Is it clear? So now I am coming to the about the structure of the testis. Testis are basically oval in shape. टेस्टिस जो होती हैं ओवल शेप की होती है, अंडे के आकार की होती हैं, एंड इट्स लेंथ इज़ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर. ओके, वी हैव टू थिंग्स, एक तो लेंथ की बात करेंगे हम, एक विड्थ की बात करेंगे. नाउ इफ़ यू विल ऑब्जर्व फिगर, आई हैव दिस वन फिगर यू कैन ऑब्जर्व हेयर. इसकी जो लेंथ होती है टेस्टिस की वो 2 to 5 सेंटीमीटर होती है, एंड जो इसकी विड्थ होती है, सॉरी लेंथ इसकी जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है. टेस्टिस जो है, टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग. टेस्टिस जो है एक स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल कवर से क्या रहता है, कवर्ड रहता है. और टेस्टिस का अगर हम क्रॉस सेक्शन का एरिया काटें, अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं टेस्टिस का, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर तकरीबन 250 इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. इज इट क्लियर? यानी टेस्टिस जो है ओवल शेप की है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में है, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ में है. इसके ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करेंगे तो इसके अंदर हमें 250 कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे. एंड दिस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ना अब बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है. अब हर एक कंपार्टमेंट के अंदर अगर हम देखें, हर एक लोब्यूल के अंदर अगर आप अब देखेंगे, तो ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. यानी इसके अंदर पाइपलाइंस ही होती हैं जिनको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स. इन ट्यूब्यूल्स का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर द साइट ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन. बेसिकली दीज आर द साइट ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन. नाउ अभी कैसे स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल. हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, इसके अंदर 2 अलग अलग टाइप की सेल्स की लाइनिंग होती है, 2 अलग अलग टाइप की इसमें सेल्स होती हैं. द फर्स्ट वन सेल्स आर कॉल्ड एज मेल जर्म सेल्स, एंड द सेकंड वन सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स. पहली जो सेल्स होती हैं इन्हें बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, और जो दूसरी सेल्स होती हैं इनको बोला जाता है सर्टोली सेल्स. अब दोनों के फंक्शन भी डिफरेंट है. मेल जर्म सेल का काम क्या होता है? जर्म सेल हमेशा वो सेल होती है जिसको कि मदर सेल बोला जाता है. जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ा था ना, पीएमसी एंड एमएमसी में, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड दूसरा आपने पढ़ा था मेगा स्पोर मदर सेल्स. तो सिमिलरली यहाँ जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, ये भी आपकी स्पर्म मदर सेल्स वी कैन से देम. ठीक है, ये जो होती है मियोटिकली डिवाइड करती हैं और स्पर्म फॉर्मेशन का काम करती हैं. वहीं जो दूसरी सेल होती हैं, उन सेल्स का नाम होता है सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? जो स्पर्म बन रहे हैं, यानी कि जो स्पर्म बना रही हैं, जो सेल्स, यानी कि जो जर्म सेल्स डिवाइड हो रही हैं और स्पर्म बना रही हैं, तो उनको न्यूट्रिशन देने का काम करेगा ये. तो मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, germ cells which are responsible for the production of the sperm, while the other one cells are called as Sertoli cells, and these cells are responsible for giving nutrition to the germ cells. ठीक है, इसके अलावा there is the regions outside the seminiferous tubules called interstitial spaces. अब देखो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट के अंदर पाइपलाइंस है, पाइपलाइंस के अलावा भी तो जगह होगी ना, स्पेस होगा. जो स्पेस होता है उस स्पेस में कुछ अलग से टाइप की सेल्स होती हैं. देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो 2 टाइप की सेल हैं, बट
एक रूम है, रूम के अंदर 3 पाइप हैं, पाइप के अलावा कुछ स्पेस तो होगा ना, जो स्पेस होगा उस स्पेस में क्या होगा, स्पेशल सेल्स होती हैं। इन सेल्स को हम या तो बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, यू कैन ईजिली ऑब्जर्व हेयर इन द बोल्ड लेटर्स, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, या इनका दूसरा नाम होता है लीडिंग सेल्स। आपने पढ़ा भी होगा इन अर्लियर क्लासेस। देयर आर टू फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड द सेकंड वन इज द प्रोडक्शन ऑफ मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है, व्हाट इज इट, एंड्रोजन। सो ये लीडिंग सेल ही वो सेल्स हैं जो मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड along with it some other immunological components are also present in the cells, जो immune system को maintain करने का काम करते हैं। So I am revising once again very quickly. Testes are present in a pair and located in the pelvic region outside the abdominal cavity. uh, Length is 4 to 5 centimeter, width is 2 to 3 centimeter, ठीक है। And each testis has 250 compartment like structures which are called as testicular locules, and each locule contains 2 to 3 highly coiled seminiferous tubule, and the inner lining of the seminiferous tubules has two types of cells, germ cells and germ cells and Sertoli cells. Germ cells are responsible for production of sperm, while the Sertoli cells are responsible for the providing nourishment to the germ cells. And the outer space of the seminiferous tubules has some special cells which are called as interstitial cell or leading cell, which are responsible for the production of androgen sex hormone. This is enough for today. Tomorrow we will meet once again and we will discuss the later on parts of the human male reproductive system. Thank you.